बोलते हैं horizontal surface. So roads are designed like this, right? Normal जो roads आप देख रहे हो वो horizontal surface. But road ऐसे नहीं बनाते. We always prepare road. We always make road like this. We have a small slope in it. ठीक है? हम हमेशा slope देते हैं. तो स्लोप के दो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं. फर्स्ट, रेन वाटर विल नॉट एक्यूमुलेट ऑन द सर्फेस. तो अगर बारिश का पानी आ रहा है तो वो सारा ड्रेन हो जाता है. ठीक है, स्लोप होगा तो वो ड्रेन हो जाएगा. अदरवाइज इट विल एक्यूमुलेट ऑन द सर्फेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्रेवल ड्यूरिंग द रेन टाइम ऑफ दिस विमान नगर एरिया और उंदरी एरिया, यू हैव अ पॉटहोल्स. पानी भर जाता है रोड में. देयर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देयर, राइट? सो जनरली जब नए रोड्स हम बनाते हैं तो वी जस्ट गिव अ स्मॉल स्लांट टू द रोड, सो दैट जितना भी बारिश का पानी वो सारा ड्रेन होता है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ घाट एरिया, when we provide slope, it provides necessary centripetal acceleration for proper turn. That is called as safe turn. That concept is called as safe turn basically. ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेफ टर्न, राइट? इस तरह से रोड को डिजाइन करते हैं ताकि रोड आराम से टर्न ले ले, सेफ टर्न ले ले. Skidding now. So there is no skidding in the road, right? Now, I will do a small derivation based on this particular concept. It is it's proper. Now see. So this is a banked road. Banked road means the road inclined at a particular angle. So angle is theta degree. Theta degree is the angle. This angle. Yeah. So this is your car. Okay. Now how many forces are acting on this car? First one is the weight that is acting. So weight always acts downward. Then we have a normal force. Now important point regarding normal force, it always acts perpendicular to the surface. So basically this is road. This is road. So normal force will act perpendicular to the surface. That means normal reaction force will act perpendicular to the surface like this. This is normal reaction. Perpendicular to the surface. So this is surface. It acts perpendicular to the surface. Not perpendicular to weight. Do not get confused. Weight always act downward. So this is weight. In case of horizontal surface, weight is acting downward. W is equal to mg. Normal reaction is acting like this. Yeah. But this is slanted. Right, yeah. So it is perpendicular to the surface at this stage also. It is perpendicular to the surface. So always remember, normal reaction always act perpendicular to the surface. Now we have two component of normal reaction. So this component, so this angle is theta, so it will be n cos theta, and perpendicular to n cos theta we have n sin theta. These are called as component of reaction force. So जहां से angle बनता है, from where the angle is formed, so that component is always cos component. So angle is formed from here, so this component is cos theta, and perpendicular to cos theta is sin theta. Perpendicular to cos theta is sin theta. Clear? Now, see forces that are acting on the body or the vehicle. First one is the weight. Weight is acting downward. Second one, normal reaction, that is acting perpendicular to the surface. Third one. Now normal reaction is resolved in two components. We have n cos theta concept and we have n sin theta concept. So n sin theta acts along the horizontal and n cos theta acts along the vertical. It acts along the vertical. I repeat, n sin theta will act along horizontal like this, and n cos theta will act along vertical like this, perpendicular, right? Right. Now we'll balance the equations. Now in order to balance the equation, first what we do, summation of Fy equal to 0. So summation of Fy equal to 0. Fy means sum of all the forces acting along y-axis. So n cos theta is acting along positive y-axis. So this is y-axis. So this is positive y. This is positive y. This is negative y. On the right side of x, we have positive x. This is positive x. On the left hand side, this is basically negative x. Now n cos theta is acting upward. So n cos theta is positive. Weight is acting downward. So weight is negative. Weight is negative. So n cos theta minus mg equal to 0. I repeat, n cos theta minus mg equal to 0. So n cos theta is equal to mass into gravity. Mass into gravity. N cos theta is equal to m into g. This is the first equation. Okay. Now,
summation of fx is equal to 0. Step number 1 done. Summation of fi equal to 0. Now summation of fx is equal to 0. Now fx means all the forces acting along x-axis. So how many forces are acting along x-axis? So we have basically n sine theta. So this is n sine theta. We have one more force that is acting, that is called as virtual force, that is centrifugal force. It always acts away from the center. So this is the direction of centrifugal force. So n sine theta is balanced by centrifugal force, that is mv square over r. So second equation will be n sine theta is equal to mv square over r. Now we divide 2 by 1. We divide 2 by 1. So divide equation 2 by equation 1. So what is equation 2? That is n sine theta is equal to mv square over r over n cos theta. N cos theta is equal to mg, mass into gravity. Mass will get cancelled out, and will get cancelled out. Sin theta over cos theta is basically tan theta. So tan theta is equal to v square over rg. V square over rg. So this is nothing but the angle, right? Tan theta. So we are interested in theta value. So theta will be tan inverse v square upon rg. So you can write it as theta is equal to tan inverse v square over rg. Theta is equal to tan inverse v square over rg. So this is a simple concept of banking of road, that is vehicle on a bank road. I hope concept is clear. Yeah. This angle is called as banking angle. ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ. ओके, सो आप जब जाते हो से लोनावला आप जा रहे हो तो वहां पर स्पीड लिमिट दिया होता है गाड़ी का. आपने देखा होगा रोड साइड पे जो सुना हो उसमें लिखा रहता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर या डू नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर. सो वो यहां से कैलकुलेट करता है. They know the angle, banking angle value of the road. From this, they just calculate the maximum safety speed. तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है और मैं 120 की गाड़ी चला रहा हूं, इसका मतलब वो गाड़ी ठुकेगी. ये फैक्ट है, राइट? क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी कैलकुलेट किया इसने. उसको पता है कि गाड़ी स्लिप करेगी. तो 60 दिया है, तो अगर मैं 60 55 चलाऊंगा, 50 चलाऊंगा, तब तो वो प्रॉपर सेफ टर्न लेगा. उससे ज्यादा स्पीड अगर होगी आपकी तो गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, गाड़ी स्किड करेगी. तो ये गाड़ी ऐसे स्किड करती है. ठीक है, आपने देखा होगा वो सिंहगढ़ वगैरह टाइम में, बारिश के टाइम पे वो छोटे बच्चे जाते हैं स्कूटी लेकर, स्कूटी फिसल गई तो वो स्किड कर जाती है. ठीक है, वो ऐसे ही. So this angle is called as banking angle. ठीक है, so in board exam they will ask you for 2 marks. ठीक है, derivation of it. In exam we need to draw the figure. ये फिगर बनेगा. फिगर बनाने के बाद all the forces we need to write. So this is point number A, this is point number B. ठीक है, draw the figure, point A, point B, and 2 points in the next slide. So sir, I wanted to ask. Yeah. The normal reaction is resolved into the two like component. Yeah. two components, and why was this not the same case in the previous? Why? See, नॉर्मल रिजोल्यूशन कब करते हैं? व्हाई वी डू रिजोल्यूशन, राइट? रिजोल्यूशन करते कब है? ये क्लास 11 का टॉपिक है, बट मैं क्लियर करता हूं यहाँ पर. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि रिजोल्यूशन क्यों करना है. व्हाई वी डू रिजोल्यूशन? सी, रिजोल्यूशन किस लिए करते हैं बेटे? तो सपोज कर लो वी हैव एन ऑब्जेक्ट. इसके ऊपर फोर्स लग रहा है से 10 न्यूटन. ठीक है, एक और फोर्स लग रहा है से 5 न्यूटन. So if I ask you what is the total amount of force that is acting? 15 Newton. 15 Newton in the direction of left to right. So total force कितना लग रहा है? 15 Newton from left to right. ठीक है. अच्छा, अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर इस फोर्स को बनाऊं 10 न्यूटन और मैं इस फोर्स को लगा दूं 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में. So what is the total force acting on this body? Total force, we take subtraction of it. So 10 minus 5 is 5. So force is 5 Newton and the direction is from right to left. Okay. Clear concept? Concept is clear? बहुत अच्छा, very nice. बल्ले बल्ले. But problem कब आती है? Problem तब आती है जब ये force ऐसे लग जाता है. ऐसे लग रहा है. सिर्फ 30 डिग्री एंगल को. Force की वैल्यू है 10 Newton at an angle of 30 degree with horizontal. Now in this particular case हमारे पास कोई मेथड नहीं है.
We can either calculate force along x-axis or along y-axis because in generally in normal language we have only two coordinates. या तो कार इस पे चला लो, ऐसे चला लो रोड पे, तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, समझ में आ रहा है? या तो बॉडी को वाई में मूव करा दो, बट बॉडी वाई में मूव नहीं करता। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर जितने भी मोशन हो रहे हैं ये सब रोड पे हो रहे हैं। दीज आर लीनियर मोशन, रेक्टिलियर मोशन। हम स्पेस के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, स्पेस में होता है वाई, बट हमारे यहाँ सिर्फ एक्स है। तो ये फोर्स जो लग रहा है ना तो ये एक्स में है ना तो ये वाई में है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो कैलकुलेट करने के लिए आई विल ब्रेक दिस फोर्स अलोंग टू एक्सिस, आइदर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो वी जनरली ब्रेक फोर्स अलोंग टू एक्सिस। सो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो जहां से एंगल बनता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दिस कंपोनेंट इज cos थीटा एंड परपेंडिकुलर टू cos थीटा इज sin थीटा। परपेंडिकुलर टू cos थीटा इज sin थीटा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया है। Granny, you like my setup? Oh yeah, I Yeah, do. this is my studio, right? This is Yeah, a, it's nice. Yeah. actually I'm a YouTuber, right? I noticed. I mean, I didn't know, but I noticed like the studio and everything and the name. I'm a YouTuber, right? Teach for I'll some check. I'll just check. of past many days, right? We know each other. Yeah. Yeah. So this is how it works. So I have a studio basically. It's a studio. So Yeah. we have everything. So yeah. So we just break force into two component along x-axis as well as along y-axis. ठीक है, तो इस तरह से अपन break करते हैं. So that is the reason there is a need to resolve the force. So in this case, normal reaction. So it is not acting along x-axis. It is perpendicular to the surface. So it makes an angle of theta degree. So there is a need to break the vectors. Break the vector along x-axis and y-axis. So जहां से angle बनता है, that is cos component. It is not like कि x वाला cos होगा. जैसे देखो इसमें x वाला cos है. ऐसे नहीं याद करना, आपको याद करना है जहां से एंगल बन रहा है, फ्रॉम वेयर द एंगल इज फॉर्म, दैट इज कॉस कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इट्स साइन कंपोनेंट। सो फ्रॉम हियर द एंगल इज फॉर्म, इट इज कॉस कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स इज कॉल्ड एज साइन। Okay. ठीक है, इट्स सिंपल, राइट? सिंपल। Yeah. या सो प्लीज ड्रॉ द फिगर, write down this point number A and point number B, and we have two more points on the next one. Okay.
So can you please change the side? Yeah, Like, done. Really yeah, done? yeah, Okay. So next one, wait it. This one. yeah. This is point number C. This is point number D. This is point number E. Okay. Oh yes, sir, I'm done. Yeah. Next one. Chalo, write down the next article. Next topic. Now write down the next article, minimum velocity. Write down the name of the article, minimum velocity. Minimum velocity. Minimum velocity. Yes, sir. यानी ये जो डेरिवेशन है इट इज इंपॉर्टेंट वन एंड थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स इन द सेंस विल परफॉर्म मल्टीपल स्टेप्स है राइट तो उसको ध्यान से देखना समझ में आएगा सब कुछ same diagram we have same diagram this is your car and how many forces are acting on it weight normal reaction has two components sine theta as well as cos theta right now we need to find minimum velocity so that means we have to consider friction, right? Now see the friction force. So friction force always act opposite to the direction of motion of an object. So if the body is moving like this, if the body is taking a turn like this, so friction force will act in opposite direction. So this is the direction of friction. Where as friction force is not acting along x-axis and y-axis, we need to resolve the friction force. That means we need to break friction force along x-axis as well as y-axis. So this component is basically Fs cos theta and perpendicular to it is basically sin theta. So as I have told you from where the angle is formed, that component is basically cos component. So this is Fs cos theta and perpendicular to cos theta is basically sin theta. Fs sin theta. So this is the resolution for friction and we have resolution for normal reaction. Now, tell me how many forces are acting along x-axis. How many forces are acting along x-axis? So this is basically x-axis. This axis is basically x-axis. So how many forces are acting along x-axis?
summation of fx is equal to 0. Yeah. So along x-axis. So see, we have fs cos theta that is acting along x-axis. So this one, fs cos theta. Then we have n sine theta that is acting. Then we have a centrifugal force that is acting away from the center. So this is centrifugal force, right? Centrifugal force. Now fs cos theta, fs cos theta is taken as positive plus centrifugal force. So centrifugal force. Let us name the centrifugal force as mv square by r. I will use a term mv square by use r, right? mv square over r. That is centrifugal force. Yeah. Minus n sine theta. Minus n sine theta equal to 0. Okay. Now I can move this n sine theta on the right. Similarly, f cos theta on the right. So we are left with mv square over r is equal to n sine theta minus fs cos theta n sine theta minus fs cos theta. See, mv square by r is equal to n sine theta minus fs cos theta. Let us name this equation as equation number 1. So this is equation number 1. So step number 1, we need to find all the forces that are acting along x-axis. Now task 2, step number 2, we need to find number of forces are acting along y-axis. So how many forces are acting along y-axis in this particular diagram? If you observe forces acting along y-axis, forces acting along y-axis. So let me change the ink. So we have n cos theta that is acting upward, positive, fs sin theta, positive. We have weight that is acting downward, it will be taken as negative. So summation of force acting along y-axis equal to 0. So n cos theta is acting upward. So n cos theta plus we have fs sin theta. This is fs sin theta minus mg equal to 0. This is minus v mg equal to 0. mg equal to 0. Now just move this mg from left hand side to right hand side. So n cos theta plus fs sin theta is equal to mg. Let us name this equation as equation number 2. Equation number 2. Now first equation from fx is equal to 0. Second equation from fy equal to 0. So we have two equations right now. Okay. Now in the third case, what we do? We generally divide 1 by 2. We divide the equation 1 by 2. Okay. Chalo. I'll try to divide equation 1 by 2. So this is equation 1, this is equation 2. Now divide 1 by 2. Divide 1 by 2. Divide equation 1 by equation 2. So we have equation 1 as mv1 square over r is equal to n sine theta minus fs cos theta over. So this is mg is equal to n cos theta plus fs sine theta. Now it is important to note that what we will do in the next step, we will substitute the value of fs. As we know, fs is nothing but mu s into n. Mu s into n. This is the formula for fs. Fs is mu s into n. This is step number first point that we have to do. Second, what we have to do, we need to divide the entire equation by cos component, by cos theta. So what we do, we just divide the equation by cos theta, numerator as well as denominator. So why we are doing this? See, fs can be written as mu s into n. Fs can be written as mu s into n. Okay. So sin theta upon cos theta is basically tan theta. So this is tan theta. So the formula will be n tan theta minus fs can be written as mu s into n. So it is mu s into n, and cos theta will get cancelled out.
Similarly, divided by we have cos by cos will get cancelled out, so we have n plus we have fs can be written as mu s into n, sin theta upon cos theta is tan theta, sin theta upon cos theta is tan theta. And when we divide, mass will get cancelled out, so it is nothing but v1 ka square upon rg, v1 ka square upon rg. We will simplify, we'll get the answer. Now what you can do, from this step, you can take n as common, n will get cancelled out. So we have tan theta minus mu s. So v1 ka square over rg can be written as tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. 1 plus mu s times of tan theta. So v1 ka square can be written as rg, you need to cross multiply. So it is rg within a bracket tan theta minus mu s over 1 plus mu s tan theta. We are interested in finding the value of velocity. So what we do, we just take the root of it. So the final result will be v1 is equal to root of rg within a bracket. We have tan theta minus mu s over 1 plus mu s tan theta. 1 plus mu s tan theta. So this is basic result. Okay. ठीक है. So मैंने can I? क्या करा, इसको वापस से हम समझेंगे, राइट. ये बड़ा डेरिवेशन है, एग्जाम में दे विल आस्क यू फॉर 3 मार्क्स. ये बिल्कुल इजी है, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताओ, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यू हैव एनी डाउट? No. You just have to, you just have to state them according to their signs. According to the sign. ठीक है. And you have to change Equation 1, equation 2 is clear, right? Because I am worried only about equation. Because if you form equation ना, question बन जाएगा. There is no issue at all. Only the equation is important. ठीक है. Equation में कोई डाउट है तो पूछो, मैं बताता हूँ वापस. I will explain it again. I got it. ठीक है. Equation 1, equation 2 में कोई डाउट. उसके बाद क्या करना है, अपने को दोनों को डिवाइड करना है. डिवाइड 1 by 2. ठीक है. जब हम डिवाइड करेंगे तो दो चीजें करेंगे. सबसे पहले हम fs को लिखेंगे mu s n. fs को क्या लिखेंगे? mu s n लिखेंगे. ठीक है. और दूसरी चीज हम क्या करने वाले हैं, दूसरा पॉइंट हम क्या करने वाले हैं, हम साथ ही साथ इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड करें. आई रिपीट, मैं दो चीजें करूंगा. जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो आई विल डू टू थिंग्स. fs को मैं लिखूंगा mu s n. fs को क्या लिखूंगा? mu s n. और मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करूंगा. ठीक है, ये मैं करूंगा. ठीक है. बुक के अंदर प्रियानी ये स्टेप नहीं लिखा गया है. मैं तुम्हारी बुक से दिखाता हूँ कि बुक से ही स्लाइड मैंने बनाई है. बस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, आंसर. अब ये आंसर कैसे आया ये नहीं दिया है बुक में. दीज आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो. ये सारे स्टेप्स हैं जो अपने को फॉलो करने हैं, राइट. तो हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को लिखा ऊपर, फिर इक्वेशन 2 को लिखा, cos थीटा से डिवाइड किया दोनों साइड, और fs को mu s n लिख दिया. ठीक है. अब sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, cos अपॉन cos कैंसिल होता है, तो मैंने ये कर लिया. ठीक है. n fs को मैंने mu s into n लिखा है. देखो, fs को mu s into n लिखा है. यहां से m को उड़ा दिया, काट दिया अपन ने, तो v1 का स्क्वायर अपॉन rg आ गया. इस स्टेप में कोई डाउट है आपको? नहीं, उधर नहीं. क्लियर ना? कंफर्टेबल? कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से पूछो बिंदास, नो इशू एट ऑल. ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है चीज. अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में आई विल टेक n एज कॉमन. देखो, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो ये कट जाता है. कॉमन लेकर कैंसिल बोलते हैं इसको, कैंसिलेशन. कॉमन लेकर कैंसिल कर. तो यहाँ से n कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? tan थीटा. यहाँ पर n नहीं है तो क्या बचेगा? माइनस म्यू एस. tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन n मैंने काट दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस n काट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? म्यू एस tan थीटा. मुझे निकालना था v1 का स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं इस rg को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, एज इट इज मैंने लिख दिया. मुझे v1 निकालना है, रूट नहीं निकालना है, ये स्क्वायर है तो मैं इसका रूट ले लूंगा. ये मेरा आंसर है. Got it? Clear? I got it. Yeah. So see, this derivation, as far as this derivation is concerned, ये examiner का favorite होता है. They will ask you for 3 marks. So we have to show the calculation.